So hi everyone. Now we will discuss the magnetic effects of electric current, chapter 13 of class 10th. It is a lecture third. So we have discussed in the previous classes about the introduction of the magnetic effects of electric current, magnet and the properties. We have done what are the field lines, what is magnetic field, what are the characteristics of field lines. So these topics we already discussed. Now we will start the magnetic field of a bar magnet. Right? So we have discussed in the previous classes that what is magnetic field. So magnetic field is a field or space around a magnet or a current carrying conductor in which magnetic force can be experienced. So that is magnetic field. It is represented by the letter B and its SI unit is Tesla. So now we discuss the magnetic field around a bar magnet. So suppose we have this bar magnet having north and the south pole. So what are the directions of the magnetic field lines across a bar magnet? The magnetic field lines start from outside the magnet, their direction is from north to south, and inside the magnet, their direction is from south to north. That's why they form the closed loop. These are the properties which we have discussed in the magnetic field lines, the properties of magnetic field lines. So what happened? All the magnetic field lines across is start from north and end at south. Okay, and inside the magnet, just like this. So pattern, it formed like this. If we see in a diagram, so this is a pattern across a bar magnet. All the magnetic field lines originate outside the magnet from the north and end at south. Okay, and inside the magnet, south to north. And the magnetic field lines are much closer to each other near the poles. ठीक है, पोल्स के पास आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास हैं और सेंटर में दूर हैं. तो व्हाट डज दैट मीन? इन द प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर होगा, पास होंगी, एट दैट पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर एट दैट पॉइंट. ठीक है. So this is a magnetic field. So where the magnetic field is stronger? So magnetic field is stronger near the poles. ठीक है, near both the poles. जो strength होगी वो बहुत stronger होगी, right? This is a magnetic field. Next we have, what are the different rules or laws used to determine the direction of the magnetic field? So first rule that we have is right hand thumb rule. Okay, so what is right hand thumb rule? According to this rule, according to this right hand thumb rule, the thumb points in the direction of current. ठीक है. So we hold our right hand in such a way that the thumb points the straight current carrying conductor and the curled fingers represent the magnetic field, right? So thumb points in the direction of current through a straight conductor. Okay, direction of current through a straight conductor, and the curled fingers points in the direction of magnetic field. Right? So this is right hand thumb rule.
this thumb points in the direction of straight current carrying conductor. So this thumb points the direction of current, and these curled fingers are used to determine the direction of magnetic field. Through the conductor, through the straight conductor, if the current goes vertically upward, okay, so these fingers represent the magnetic field, which are in the form of concentric circles. ठीक है, concentric circles की form में होंगी. If we have the straight current carrying conductor, if the current goes upward, ठीक है, so how the magnetic field will be? Like this. It is represented by the concentric circles. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, so this is magnetic field. If the current goes up, the direction of magnetic field is like this. ठीक है, when the current is coming out from the screen या from the page, it is represented by the dot. ठीक है, अगर magnetic field बाहर आ रहा है, ठीक है, it is a direction of magnetic field outwards. If the magnetic field goes into the screen, it is represented by cross. ठीक है, so it shows the direction of magnetic field inwards, यानी कि into the screen or into the page, right? So this is how we can draw magnetic across a straight current carrying conductor, and the direction of magnetic field is determined by the right hand thumb rule. This thumb points in the direction of current and these fingers in the direction of magnetic field. If the direction of current is downwards, in this case, the current goes vertically downward direction, then magnetic field also in the concentric circles like this, but this is how you can represent the current goes down and magnetic field are clockwise. Okay, so this shows the direction of magnetic field across it. This is the direction, right? So if current goes up, the magnetic field lines are anti-clockwise. If the current goes down, magnetic field lines are clockwise. So this is how we represent the magnetic field with the direction of current by the right hand thumb rule. It is right hand thumb rule. Thumb points in the direction of current and the curled fingers magnetic field. Okay? We can also use the same for the circular current carrying conductor. It is for the straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor. Okay? Now we can use the right hand thumb rule for the circular current carrying conductor also. How? Now if our current loop is in the form of circles, in the loop, current loop or circular current carrying conductor is same. अगर हमारा जो current carrying conductor है वो circular है, so these fingers now represent the direction of current and this thumb represents the direction of magnetic field. ठीक है, उल्टा हो जाएगा उस केस में. इस केस में जो थंब था वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड द मैग्नेटिक फील्ड and the magnetic these curled fingers. ठीक है, now if our current conductor is circular in the form of loop, so these fingers now represent the direction of current. Here current is clockwise or anti-clockwise, तो ये direction जो होगी वो current की होगी and this is a direction of magnetic field. यानी कि thumb और curled fingers का जो function था straight current carrying conductor के लिए, circular के लिए वो reverse हो जाएगा. Understood that point? किस तरीके से हो जाएगा? If the direction of current is clockwise, ठीक है, if the direction is clockwise, this is a direction of current through a circular loop. If it is clockwise, ठीक है, तो clockwise के केस में what we have shown कि if it is clockwise that means magnetic field goes downwards, which is represented by the thumb. अब thumb जो है वो magnetic field को करेगा and the direction of current by the curled fingers.
So right and thumb rule we can use to determine the direction of magnetic field in case of straight current carrying conductor as well as in case of circular loop. ठीक है? So this is a right and thumb rule, right? This goes down, ठीक है ना? ये down है, so the direction of magnetic field is clockwise. अगर ऊपर होगा anti-clockwise. Direction of magnetic field is anti-clockwise in case of straight current carrying conductor. So I hope you understood about the right and thumb rule. ठीक है? Current, magnetic field, straight के केस में. Now we have Fleming's left hand rule. Another rule which used to determine the direction of magnetic field या force. So that is Fleming's left hand rule. What is Fleming's left hand rule? If we stretch our left hand in such a way that the thumb, the index finger and the middle finger are mutually perpendicular to each other. इस तरीके से हम अगर हमारे left hand को stretch करते हैं, ठीक है? So the thumb points in the direction of force या motion of the conductor. This first finger या index finger represent the direction of magnetic field, and this middle finger represents the direction of current or velocity vector. So this is Fleming's left hand rule. So what is Fleming's left hand rule? This is thumb, which points in the direction of force or the motion of conductor. This represents the magnetic field. Magnetic field. And this represents the direction of current या फिर velocity vector. ठीक है? So what is, how we can define? If we stretch our left hand in such a way that the thumb, the index finger, which is the forefinger we can also say, ठीक है? You can use the word forefinger or first finger, and the middle finger are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. Then thumb points in the direction of force or motion of the conductor, ठीक है? forefinger or first finger, first finger points in the direction of magnetic field B, and second finger या middle finger points in the direction of current or the velocity vector. ठीक है? Current or velocity vector. ठीक है? Current is represented by I and velocity vector with V vector. Understood ना? How we can memorize it? Father, mother, child. Father, ठीक है? Having a big responsibility, then mother
and then children. ठीक है. So F means force, M magnetic field and C child. तो फादर मदर चाइल्ड से हम इसको याद रख सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, दैट थंब पॉइंट्स they are mutually perpendicular to each other, then thumb points in the direction of force or motion of the conductor, this finger magnetic field, this finger the direction of current. So we place, how we can use it. Suppose if we have, in the question it is asked that you have a straight conductor, ठीक है, and the current goes up. The current goes up. Now find or determine the direction of magnetic field, determine the direction of the force. So you use a Fleming's left hand rule. Firstly, if only conductor is given, तो current carrying conductor given है, straight current carrying conductor given है. So as we know कि a conductor through which a current is flowing, it behaves like a magnet. It produces magnetic field around it. How it produces a magnetic field around it, we have already discussed in the previous classes. So this is a current carrying conductor. It produces magnetic field around it. And what is a rule which is used to determine the direction of magnetic field? अगर सिर्फ हमारे पास current given है, so we use right hand thumb rule. If the current goes up, how the magnetic field? एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स आउटवर्ड. ठीक है, तो इसके अंदर से कैसे होगा? आउटवर्ड करंट होगा एंड आउटवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. ठीक है, डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या आप चाहो तो डायरेक्शन शो भी कर सकते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करके. सो नाउ टू फाइंड द फोर्स, अगर इस करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, सो देयर वी यूज अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि करंट गोज अप. करंट जो है वो ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है. सो करंट गोज अप, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इट इज आउटवर्ड्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गोज अप, मैग्नेटिक ये करंट गोज अप, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है. फोर्स कहाँ होगी? द फोर्स इज आउट, यानी कि इस साइड होगी. अंडरस्टूड ना? दिस इज हाउ वी कैन यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में करंट गिवन है तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो आप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज: फोर्स, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर. आपको एक या दो चीजें गिवन है, यू कैन फाइंड द थर्ड वन. ठीक है, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज हाउ वी कैन यूज इट. अंडरस्टूड ना? Now we have magnetic field through a straight current carrying conductor. This is a straight current carrying conductor. एक कंडक्टर है, स्ट्रेट है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. अब करंट फ्लो कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. And which rule we have used to determine the direction of magnetic field? Right hand thumb rule. If the current goes up, the magnetic field is like this, anti-clockwise. Anti का मतलब क्या होता है? क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के साथ. ठीक है, एंटी मतलब क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं, जो सुइयां होती हैं, वो इस तरीके से चलती हैं. एंटी का मतलब उनकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो what is a magnetic field through a straight current carrying conductor? Consider a straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor. Conductor. ठीक है, straight current carrying conductor. By using right hand thumb rule, we can determine the direction of
magnetic field across across this straight current carrying conductor. So the direction of magnetic field is anti-clockwise. Okay. So magnetic field lines are magnetic field lines across straight current carrying conductor, straight current carrying conductor are in the form of concentric circles. ठीक है, in the form of concentric circles. If the direction of current is vertically upward direction through a straight current carrying conductor, then the direction of magnetic field lines are anti-clockwise. अगर current की direction नीचे है, the direction of magnetic field lines are clockwise. ठीक है. And what is the magnitude? What is the formula to find the direction? ठीक है. So this is a straight current carrying conductor. Firstly, we took a point where we have to find the magnetic field. तो आपको ये पता चल गया कि straight current carrying conductor होगा तो magnetic field lines किस form में होंगे? They are in the form of concentric circles. What are concentric circles? Those circles which have a common center. इनका जो center होगा वो common होगा और इस तरीके से circles बनेंगे, concentric circles. ठीक है. So we have to took a point R. ठीक है, हमने ये R ले लिया, R point. This is middle से एक point लिया, P point, which is R distance apart from the straight current carrying conductor. एक point लिया जो कि कंडक्टर से, ये कंडक्टर है सपोज, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट, R distance apart एक P है, यहाँ पे एक P point है. So we have to find the magnetic field at point P due to this current carrying conductor. ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका कितना मैग्नीट्यूड है R डिस्टेंस दूर पे. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो द मैग्नेटिक फील्ड at point P, which is R distance apart from the straight current carrying conductor. ठीक है, R distance apart from a straight current carrying conductor. So what is a formula for that magnetic field? It's mu naught I upon 2 pi R. ठीक है, so we can write it is given by ठीक है ना. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मिडल में R डिस्टेंस अपार्ट वी हैव अ पॉइंट. At that point we have to find the magnetic field due to this straight current carrying conductor. So what is the formula for that magnetic field? B is equals to mu naught I upon 2 pi R. What is B? The magnetic field जो straight current carrying conductor की वजह से है. ठीक है, it is magnetic field. Mu naught is, it is magnetic permeability. Magnetic permeability. What is magnetic permeability? It is that property which shows the magnetic behavior of a material. कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटिक हो सकता है. ठीक है, तो इट शोज दैट कि इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं, कितना वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है. That is represented by this mu naught. So this is magnetic permeability of
फ्री स्पेस, जहां पे नोट लगा होगा दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम की बात हो रही होगी. सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर जो भी जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा. आर इज द रेडियस. ठीक है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. क्योंकि सर्कल्स हैं तो इट हैव द रेडियस. ठीक है, या इट इज नॉट एक्चुअली द रेडियस, इट इज अ डिस्टेंस, जितनी दूर आपका पी पॉइंट है. ठीक है, डिस्टेंस at which you have to find the magnetic field, at which you have to find the magnetic field, you have to find the magnetic field. ठीक है, so B is equals to mu naught I over 2 pi r. this is the formula in case जब आप मिडल में फाइंड करना है आपको, मतलब P पॉइंट आपका मिडल में है, और if in case your P point is at the ends. ठीक है, यहां पे P पॉइंट होगा तो क्या होगा? In that case the formula will be, in that case if the P point is, if P point is near the ends of the straight current carrying conductor, ends of the straight current carrying conductor, then formula, it's B is equals to mu naught I upon 4 pi r. ठीक है ना, mu naught I upon 4 pi r हो जाएगा. Quantities are same, where you have to write all these things ki where B is the magnetic field, mu naught is the magnetic permeability of free space, I is the current flowing through the conductor, and R is the point at which you have to find the magnetic field at the ends of the straight current carrying conductor. So you have to write each and everything that is used in the formula that is asked in the question. ठीक है, so this is a formula. So now, what are the factors on which the magnetic field of a straight current carrying conductor depends? कौन-कौन से factors हैं जिन पे ये depend कर रहा है? Factors on which the magnetic field of a current carrying conductor depends. Magnetic field of a current carrying straight conductor depends. Straight conductor depends. ठीक है, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है? सी, क्लियरली सी कि देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है. ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7. न्यूमेरिकली म्यू नॉट जो है वो इसके इक्वल है. अगर आपको म्यू नॉट की जगह वैल्यू पुट करनी हो तो इट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7. राइट, नाउ फ्रॉम हियर क्लियरली सी कि ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड across the straight current carrying conductor या across it is directly proportional to the current flowing
through it. That means B is directly proportional to I. This is the first factor. ठीक है? If you increase the magnitude of the current through the conductor, the magnitude of magnetic field is also increased. जितना the current flow करेगा straight conductor में से, उतना ज़्यादा magnetic field produced होगा, right? The more the amount of current through the conductor, the strength of magnetic field is stronger, more stronger. Second factor which affects is in this formula it is clearly visible that this magnetic field is inversely proportional with the R. देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जिसकी वैल्यू ये हो गई 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी 10 रेज टू माइनस 7, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई. नाउ so 2 pi is also constant. Now what we have, B is equals to I and R. So these are the two factors on which it depends. And also another one factor we can multiply with n number of turns. n के साथ भी multiply कर सकते हैं. तो there are three factors. यहाँ पे भी directly B is directly proportional to I and inversely proportional to R. We can multiply with n. ठीक है, अगर n number of turns है तो स्ट्रेट के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होंगे, एक ही कंडक्टर है, ठीक है, सर्कुलर लूप में होगा n. सो हियर वी हैव टू फैक्टर्स. स्ट्रेट के केस में इफ वी हैव ओनली वन कंडक्टर तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? तो व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance. जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड. This. If we increase the distance from the straight current carrying conductor, the magnitude of magnetic field is weaker. So suppose in this case we have this P point. If we increase this distance till here P dash, so in comparison to the earlier we have increased the distance, then magnitude of magnetic field decrease. ठीक है, तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है? अगर आप इंक्रीज कर रहे हो एक क्वांटिटी को, देन अनदर क्वांटिटी डिक्रीज. आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर. जैसे अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ठीक है, सेम फैक्टर से आपने इंक्रीज किया एक क्वांटिटी को, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, so this is the meaning of inversely proportional. Now we have magnetic field through a circular loop carrying current. अब तक तो हमारे पास था straight current carrying conductor. There are two factors on which the magnetic field of a straight current carrying conductor depends. Magnetic field is directly proportional to I and it is inversely proportional to the R. Distance के inversely था. Now we have our conductor in the form of circle. Circular conductor है हमारा. ठीक है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? सर्कुलर है. सो कंसीडर अ सर्कुलर लूप carrying current I and having radius R. ठीक है, अब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? स्ट्रेट है. नाउ वी यूज द राइट हैंड थंब रूल. Now this curled finger determine the direction of current and this determine the direction of magnetic field.
So current is anti-clockwise, the magnetic field is outward. So how we represent the outward? By the dot, 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 dot. ठीक है? So this dot represents that the direction of magnetic field is outward, यानी कि out of the screen. ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ बाहर की तरफ, ठीक है? So and how we can represent that? The magnetic field in circular loop carrying current या circular current carrying conductor, circular loop is given by B is equals to mu naught I upon 2R, ठीक है? mu naught I upon 2R. R वो डिस्टेंस है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो. अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो R इतना हो जाएगा. और ज्यादा दूर है आपका P पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? तो दिस इज R द डिस्टेंस. सो म्यू नॉट I अपॉन 2R. एंड क्योंकि सर्कुलर लूप है तो कितने भी n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं. So we multiply this with n. So n mu naught I upon 2R. So this is the formula to find the magnetic field in case of circular loop. We use a same the right hand thumb rule. But अब यहाँ पे क्या होगा right hand thumb rule में जो curl fingers होंगी they now represent the direction of current and thumb points in the direction of magnetic field which is outward. और आउटवर्ड करंट स्क्रीन से बाहर आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड, पेज से बाहर आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं? सो देयर आर 3 फैक्टर्स. नंबर 1 करंट, ठीक है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड. एंड डिस्टेंस के जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, इट इज अ डिस्टेंस r which is inversely proportional to the magnetic field. So these are 3 factors. नंबर 1 हो गया करंट, ठीक है? So magnetic field is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है? That means B is directly proportional to I, right? Second factor हो गया number of turns. के so B is directly proportional to the number of turns. Directly proportional, what is the meaning of directly proportional? सीधे तौर पे वो मल्टीप्लाई है. अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे अनदर वन इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय द सेम फैक्टर. अगर करंट इंक्रीज करोगे सर्कुलर लूप में सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज्ड. अगर आप करंट को डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिक्रीज्ड. इट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? हियर आल्सो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, यानी कि सर्कुलर लूप की 1 टर्न है, 30 टर्न्स हैं, जो 30 टर्न्स जो होंगी वो 30 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा विद इन कंपैरिजन टू 1. तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ग्रेटर. अगर आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम है मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो लेस, ठीक है? थर्ड फैक्टर ऑन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप डिपेंड्स, द डिस्टेंस. So this B is inversely proportional to the distance.
if you increase the distance from the center of the circular loop, B is reduced. और अगर आप R को कम करते हो, magnetic field is greater. ठीक है? So this is how, these are the factors on which the magnetic field of a circular loop depends. So in today's lecture, what are the different topics which we have covered it? What are the different rules? The magnetic field of a bar magnet, कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से लूप बनेंगे, क्लोज लूप बनेंगे. जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होगी एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होगी. Then we have covered the magnetic field. What are the different rules or laws which are used to determine the direction of magnetic field or force? So we have two rules, right and thumb rule. ठीक है? This represent the direction of current and these are by magnetic field. और अगर circular loop है, so these represent the direction of current and this the magnetic field. ठीक है? Next rule we have Fleming's left hand rule. If we stretch our left hand in such a way that these three are equally perpendicular to each other, this thumb points in the direction of force, this magnetic field, this current. Father, mother, child. This is how we remember it. Next we cover the magnetic field through a straight current carrying conductor. B is equals to mu naught I upon 2 pi r, or at the ends mu naught I upon 4 pi r. So the magnetic field of a straight current carrying conductor depends on current. B is directly proportional to current, and another factor is B is inversely proportional to the distance, that is r. Next, the topic we have covered it is magnetic field in case of a circular current carrying conductor, यानी कि circular loop current carrying conductor हमारा अब circular form में है. Now the magnetic field we can determine by the right hand thumb rule. ठीक है? This represent the direction of current and this the magnetic field. ठीक है? So the formula is mu naught I upon 2r. So again there are n number of turns also multiplied. So there are the three factors on which this magnetic field depends. B is directly proportional to I, second B is inversely proportional to R, and third B is directly proportional to the n number of turns. So here we can end today's lecture. The upcoming topics we will cover in the upcoming classes. Okay? The next topics we will cover. So thank you.